हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू। दोस्तों, आज के करेक्शन के बाद काफी बातें चल रही हैं मार्केट में कि इज इट एंड ऑफ शॉर्ट टर्म बुल रैली विच स्टार्टेड फ्रॉम द लोज ऑफ द करेक्शन डे। तो आई थॉट मैं सिर्फ अपना एनालिसिस आप सबके साथ शेयर करूंगा, और ना ही सिर्फ मैं अपना एक एनालिसिस शेयर करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो में छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा आप सब ट्रेडर्स के साथ, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, सो काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ टॉकिंग अबाउट निफ्टी फ्यूचर्स, मैंने जो अक्टूबर 2023 के लोज थे करीबन 18,800 से, वहां से लेकर मैंने रीसेंट हाई को रिट्रेस किया है, एंड वी हैव दिस लेवल ऑफ समवेयर अराउंड 23,650 23,600 राउंड फिगर में पकड़ रहा हूँ। सो ये जो लेवल है ये 23.6% रिट्रेसमेंट है फिबोनाची में, और अगर मैं इलेक्शन का जो लो है वहां से लेकर रीसेंट हाई तक रिट्रेस करता हूं, देन आई एम गेटिंग द सेम लेवल 23,600 650 एज अ रिट्रेसमेंट विच इज 38.20% रिट्रेसमेंट। ठीक है, दोनों ही चार्ट में डेली और वीकली दोनों में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का ऊपर नीचे है, लेकिन दोनों चार्ट में ऑलमोस्ट सेम हमको लेवल या तो बैंड दिख रहा है। नाउ इफ आई गो टू द 2 आवरली चार्ट, 2 आवरली चार्ट में अगर मैं रीसेंट जो स्विंग बना था, आप आवरली चार्ट भी ले सकते हैं इफ यू विश टू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। देन द नेक्स्ट सपोर्ट आई एम गेटिंग इज एट 23,777, यानी कि 23,750 राउंड फिगर में। तो 23,750 से लेके 23,600 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट में, नंबर वन। नंबर टू, देखिए करेक्शंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। काफी करेक्शन लोकल रीजंस के वजह से होते हैं, काफी करेक्शन होते हैं जस्ट बिकॉज मार्केट इज ओवरबॉट, वी आर कमिंग डाउन, रिट्रेसिंग, कंसोलिडेटिंग, अगेन मेकिंग न्यू हाई। वो एक अलग सिनेरियो है जो अभी हम विटनेस कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट यू सी राइट नाउ इट इज जस्ट नॉट अ करेक्शन। सी अंडरस्टैंड समथिंग, ये करेक्शन को देखिए, स्टेडी करेक्शन ऊपर से नीचे, देन अगेन रैली, अगेन अ करेक्शन, देन अगेन अ रैली। इफ यू सी दिस, if you see this sudden correction, gap down, and then what you see is a sudden fall and a very big fall of close to 2.5%. and with this fall मैंने एक चीज शायद से लास्ट वीक को भी बोली थी, that the momentum is getting slower। और ये सेम चीज अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट को ओपन करोगे, because the entire correction started with the American markets. You can see over here, same thing is visible in the Dow. Higher highs in price, lower high in RSI, negative divergence. All right. So मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो करेक्शन अभी चल रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ओवरऑल अपने इंडियन मार्केट्स में, ये एक ग्लोबल करेक्शन है। इट इज नॉट जस्ट अ लोकल करेक्शन। ऑल राइट। सो फर्स्ट थिंग इज 23,750 से लेके 23,600 एक सपोर्ट है। नाउ दो चीजें हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से बाइंग जरूर हुआ है, बट इट डज नॉट से दैट इट इज अ परफेक्ट बॉटम। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है मार्केट कल, बिकॉज वी हैव अ हैमर ओवर हियर, इन फैक्ट इफ यू डू बाउंस बैक टुमारो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज आरएसआई यहाँ पे वेरी वेरी ओवरसोल्ड रीजन में आ गया है 21 के करीब। अगर हम बाउंस बैक करते हैं तो इमीडिएटली 24,300 24,350 ये जो लेवल है, दिस विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी फ्यूचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा रेड कैंडल है। नाउ व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर जोन, अगर वापस सेलिंग आया तो मार्केट को वापस नीचे पुश किया जाएगा आज के लो की तरफ। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली अगर आज का लो हमने ब्रेक कर दिया with complete momentum, then Nifty will try to test 23,750, 23,600. Now मेरा इतना ही कहना रहेगा कि the way market has started falling right now, मेरे हिसाब से, see if you are an intraday trader it's a different thing. I am more of a positional and a swing trader. So generally position and swing trader जब एक टर्न अराउंड होता है मार्केट में, immediately नए ट्रेड्स नहीं लेते हैं। First they try to manage their old open trades. So what I'm trying to do is right now, जो जितने मेरे ओपन लॉन्ग पोजीशंस हैं, जहां जहां हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा उसमें मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। जहां पे ट्रेलिंग स्टॉप नहीं होगा, I'll stay long in that particular sector. Say for example, I had long positions in pharma. So pharma has relatively outperformed. It has fallen but much lesser than other sectors. I have long position in
one of the other sectors also, but still pharma is outperforming. तो कहने का मतलब ये है कि as of now, if you are a swing and a positional trader, rather than taking new view from the market and saying मैं क्या position बनाऊं, क्या trade करूं, उसके बजाय hold on, stay cool, calm and composed, panic मत करिए, अपने ओल्डर पोजीशंस को मैनेज करिए, पहले एग्जिट आता है तो एग्जिट करिए, नहीं आता है तो मत करिए. When a new view develops, when a new trend develops, that is the time you start going long or short in the market. ठीक है. In fact, I have two sectors right now which can act as a very good long सेक्टर, मतलब उसमें तेजी कर सकते हैं हम लोग, नॉट एज ऑफ नाउ, थोड़े दिन के बाद, बट उसमें पूरा व्यू नहीं बना है. तो जब तक पूरा व्यू नहीं बनेगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू डिप्लॉय माई मनी, आई विल वेट वेरी वेरी पेशेंट. When we talk about Bank Nifty is slightly more weaker in comparison to Nifty, because Nifty has not even retraced 23.6%, but Bank Nifty is almost retraced 38.20% retracement of this entire swing. In the daily time frame chart also, this is a pretty decent support. मैं आपको एक support band दे देता हूँ. ये जो support band है, ये है 49,747 से लेके 49,924. So basically we are at a very strong support. And अगर मैं बैंक निफ्टी 2 hourly charts को ओपन करूं, and if you plot a Fibonacci extension over here, तो आपको almost ये same levels दिखने के लिए मिलेंगे. So in Bank Nifty also we are at a very strong support. Now what will happen from here is very difficult to say, because जैसे मैंने बोला ये global correction है. आपने देखा निकाई में क्या हुआ, आप देख रहे हैं डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, और डाउ जोन्स में भी जो सपोर्ट है यहाँ से और 2 या 3% नीचे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स. So if global markets continue to fall, and even if we continue to fall, maybe this support will crack, the next support will come, but you need to not need to panic. Just manage your older positions. If you're a short-term trader, obviously you are going to react according to that. And after this support is broken in Bank Nifty futures, then the next support will come in short term around 49,400 or 49,000. ठीक है. In terms of sectors, I think pharma के अलावा जो सबसे ज्यादा underperforming sector था वो था PSU banks, real estate pack and especially metal pack. All right. Now what I want to share with all of you is this thing. मैंने बोला ना, मैंने आपके साथ एक मैसेज शेयर करूंगा, and this is this. ये देखिए, ये जो इंडेक्स है निकाई, if you check this index and if I just plot this date price range, you will be surprised to know that this particular index has fallen by almost 27 to 28% in a matter of less than a month. So ये बहुत सारी बातें चल रही हैं ट्विटर पे, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि इंडिया इज मच बेटर पॉइज्ड इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज एंड वी शुड नॉट वरी. एफआईआईज तो पैसा डालने यहीं आएंगे, डीआईएज भी पैसा डालेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा. फाइन, इट्स ऑल राइट. आई डू नॉट डिनाई. इनफैक्ट मैं भी चाहता हूं कि मार्केट में तेजी हो, सब लोग यही चाहते हैं. बट अगर ना हो तो क्या करोगे, तो भी यही करते रहोगे कि नहीं मार्केट में तेजी होनी चाहिए, यू हैव बेटर फंडामेंटली प्लेस. नो, दैट्स नॉट द वे. If market wants to go down, it will go down. It's not going to call you and ask you that, hi, can I go down? No. So what you need to do as a trader is you need to follow your stop losses. If market recovers, you can always come back tomorrow and buy a new fresh breakout. But आपके अकाउंट में पैसे अगर कम हो जाएंगे तो आप ट्रेड कैसे करोगे? So first thing in this sort of market, when markets are collapsing, your first thing as a good trader is not to make money or think about, what should I do? What next trade I should take? Your first duty is to manage risk in your open positions. A good trader is always a good risk manager. This is the message which I wanted to share with all of you. शायद काफी लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी ये सुन के कि अपना मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला. मैंने इतना ही बोला, मार्केट हैज इट्स ओन माइंड एंड मार्केट्स कैन करेक्ट the way they want to correct. They're not going to ask you. So better control your emotions and, concentrate on your open positions and your thought process. That's it. Trade less, trade wisely, and I hope that this video has helped you to understand how markets can move to improve your trading psychology. And if you feel so that it has helped you,
Please share this video with other people, subscribe to the channel, and also leave your comments below. So I will understand that these videos are really helping you. Trade best, trade less, trade wisely. Thank you.